Okay, we have a question. So first of all, we will arrange it. So this should be px square plus 3x square minus 4x minus 2px plus p plus 1 equals to 0. So this should become p plus 3x square minus 4 plus 2px plus p plus 1. So a should be equals to p plus 3, b should be equals to minus 4 plus 2p, and c should be equals to p plus 1. So now we have to show for the real roots. So b square minus 4ac greater than 0. No, we have to show that the roots are real. So we don't have to prove it to greater than 0. Have a look at this question. So this is b square minus 4ac ये बन जाएगा a square plus 2ab plus b square. This should be p square plus p plus 3p plus 3. So this becomes 4p square p square plus 4p plus 3. So this becomes 16 plus 16p plus 4p square minus 4p square minus 16p minus 12. So this is 4, which is greater than 0. So it means d is greater than 0. Roots will always be real. Okay, so पहले हम इसको अरेंज करेंगे. So this becomes x square plus kx minus 3x plus k equals to 0. So हो जाएगा k minus 3x plus k is equals to 0. A becomes 1. B becomes k minus 3 while c is k. So d is b square minus 4ac. So this should become k minus 3 whole square minus 4 into 1 into k. So this becomes k square minus 6k plus 9 minus 4k. So this becomes k square minus 10k plus 9. So we have to prove it that the roots will always be real. So हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें तो मैं यहाँ पर प्लस ये -6 के कहाँ से आया? So there was a slight mistake in the question that मैंने गलती से x के 3 के साथ जो है ना x लिख दिया था, वहाँ पर x नहीं है. तो अब मैंने जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला जो कि है b स्क्वायर माइनस 4ac, सिंप्लीफाई करने के बाद जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझे सर्टेनिटी नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर रूट्स पॉजिटिव रियल प्रूफ करने होते हैं तो हमें जो d है वो ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना होता है. तो हम यहाँ पर कंप्यूटिंग स्क्वायर करेंगे. कंप्यूटिंग स्क्वायर करने के बाद ये बन जाएगा जनाब k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8. सो इसका मतलब अब यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू रखें तो मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k
d greater than 0 है, that is roots will always be real.